of both worlds. What was it? What was my name? Pablo Escobar. Yeah. You look like this lady over here. Tell us about you. You introduce me or I introduce myself? No, I'll introduce you. Okay, please continue. Wait, So- wait, let me. You have to pose. Exactly. Wait. Oh, wait. Hi. Beautiful good morning out to all of you guys. Today is Tuesday. Almost सारी धीरे सारी चीजें हमारी figure out होती जा रही है. Right now we just only left with the bank account and the tax ID number वो automatically mail में आ जाएगा because हमारी unmelding हो चुकी है. Society registration which is the most important part वो हो चुकी है. दूसरी एक और चीज़ अभी हमें ये करानी है कि हमारा जो block account है we have to get it activated. So उसके लिए we'll need to go to a post office which would just be somewhere around my place. तो हमें वो figure out करके वो जाना है which I am planning कि हम कल करते हैं. आज हमारी शाम में lecture है जहाँ पे there's this professor who has come down from all the way from the US to meet us. तो हम उनसे भी मिलेंगे आज और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि हमारी first actually he's our professor of the business analytics. We'll get an opportunity to meet him as well. And I assume there is a dinner, international dinner or something, but उसके बारे में भी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है. शाम तक we'll get to have an understanding with that. Yes, that's another thing. Meanwhile अभी हम जा रहे हैं आशीष का फ़ोन ठीक कराने. उसके फ़ोन में some issues has been detected, so we'll get that sorted. We're going to the Apple Service Center. शाम में हो सकता है मेरे को एक और जगह जाना है. I needed to purchase a guitar. So यहाँ पे there is an application known as Klein & Zeigen जहाँ पे people give away their stuff या फिर they want to sell it out as well, so they can sell it out. So मेरे को कोई बेच रहा है तो मेरे को अब जाकर के उससे गिटार लेना because guitars are very expensive over here in Germany. So that's another thing. So ये थोड़ी अपडेट है भाई. धीरे अब इस कंट्री में सेटल डाउन हो रहे हैं. कल निकी का सेमेस्टर टिकट भी आ गया. So now we can ट्रैवल वाया ट्रैम. सो अब हम किसी भी ट्रैम में बैठ जाते हैं, कहीं पर भी उतर जाते हैं जस्ट टू सी कि भाई कहाँ पे क्या है. सो आई थिंक दैट्स अ गुड अप्रोच. एंड जब आप शुरू में आते हो तो इनिशियली आई थिंक इट्स द राइट टाइम फॉर यू टू ट्रैवल बिकॉज आपके पास टाइम होती है. यूनिवर्सिटी शुरू नहीं होती है, बट जब यूनिवर्सिटी प्रॉपर शुरू हो जाती है फुल स्विंग, सो देन इट गेट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. हर बार मैं यहाँ पे वॉक करके आता हूँ, हर बार मुझे ये वाटरफॉल दिखती है विच लुक्स एक्सेप्शनली स्टनिंग. सो दैट्स अगेन अनदर पॉइंट ऑफ इट. So now let's go to the Apple Service Center. मेरे भाई और बाकी कोई प्रॉब्लम हो कुछ भी हो right here, just a text away. See you. सन जब आती है ना बॉडी में अलग ही लेवल की एक एनर्जी आ जाती है and looks feels so good. This bridge, as I said, is my favorite over here. जब चलती है तो भाई एकदम ऑल ऑफ अ सडन शाहरुख खान की सारी मूवी के गाने याद आना शुरू हो जाते हैं. तो ये फ्राई मार्ट की तैयारी होनी शुरू हो गई. सो फ्राई मार्ट, जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ स्मॉलर वर्जन ऑफ अक्टूबर फेस्ट. स्मॉलर, One of the oldest festivals. बहुत क्रेजी सी. इट्स लाइक अ मिनी अक्टूबर फेस्ट. बट देन भाई यहाँ पे जो सिचुएशन होती है इससे डैम फॉगी. अभी से यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट होनी शुरू हो गई है, मार्केट लगनी शुरू हो गई है, धूप भी आ चुकी है. ब्रेमेन विच इज़ सो अनलाइकली एट दिस पॉइंट इन टाइम, बट वी आर एंजॉइंग इट. हर जगह वाइब है, हर जगह माहौल है, फील्स गुड. तुम देख लो भाई इतनी बड़ी मार्केट. स्कूटर्स की प्राइसिंग देखो 929, 589 भाई 589 की भी है वैसे. 489 this 299. Here we are. भाई तो सिचुएशन ऐसी है मेरे भाई की कि उसको कितने कार है मेरे भाई. उन लोगों ने प्रॉब्लम चेक नहीं की. उन्होंने बोला कि वी कैन रिप्लेस द होल इंटरनल कंपोनेंट्स. इट विल कॉस्ट हिम 550 यूरो, मतलब 55-60 हज़ार रुपये का अराउंड भाई इसकी चीज़ें. तो भाई इंडिया से ठीक है. इससे अच्छा हमें यहाँ से DHL से इंडिया भेजना पड़ेगा क्योंकि इसने कैशिफाई से लिया था, तो दे विल बी चेंजिंग इट फॉर हिम. बट जितना मेरी दुनिया मिल गई मुझे.
तो यहाँ से मैं अपना कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करूँगा क्या अच्छा है क्या नहीं है। यहाँ पे एक आपको अच्छी चीज़ दिखेगी, यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे एंसन्स है। ये सब जगह वो होती है जहाँ पे आपको मल्टी ब्रांड स्टोर दिख जाती है। और मैंने ना थोड़ी सी एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग कर रखी थी। तो जब आप नए आते हो ना यहाँ पे, तो प्लीज़ इंश्योर करना कि भाई इन सब चक्करों में मत पड़ना, क्योंकि आप थोड़े से इंटाइज हो जाते हो। इससे बेटर है अगर आपको करनी है शॉपिंग तो आप हैम्बर्ग चले जाना, या फिर आप यहाँ पे ऑप्टम पार्क चले जाना, जहाँ पे आपको वो मिल जाएगी फैक्ट्री आउटलेट, जहाँ से आप थोड़ी सी सस्ते में शॉपिंग कर सकते हो। मैंने बहुत गलतियाँ करी है, मैंने बहुत खर्च कर दिए थे। सो आई नीड टू look for that. So just an advice for you guys कि इसको तो सॉर्ट कर लेना अपने लिए। भाई ये भी बढ़िया सी एक स्ट्रीट लग रही है जो हमने भी डिस्कवर किया था, जस्ट बिहाइंड द होप्सुलर सिटी ऑफ द फ्लाइट साइंस। और बेसिकली वो जो मेरे पीछे आप देख रहे हो वो होप्सुलर गार्डन से रास्ता है, और ये हमारे घर के साइड का रास्ता है। भाई तो पॉटलेक का तो सीन पता नहीं, बट अभी हम अपने यूनिवर्सिटी जा रहे हैं फटाफट, बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट एज यूजुअल, जो कि बहुत गलत बात है भाई। और ये अच्छा सा नहीं लगता कि बार बार पता नहीं यार, मतलब इन जर्मनी इट्स वेरी दैट यू गाइस आर जो ना, अगर वो नहीं होता तो अच्छी सी फीलिंग नहीं आती है। बट ठीक है, लेट्स जस्ट क्विकली गो टू मीट सम प्रोफेसर फ्रॉम यूएस। एंड पता नहीं अगर पॉटलेक का सीन बनता तो देखते हैं, नहीं बनेगा तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं भाई। भाई तो क्लास हो गई हमारी ख़त्म, और अब हम एकदम बिल्कुल क्यूरियस कि क्या करना है। देखते हैं, मन तो बड़ा कर रहा है कि हम चले जाएं इंटरनेशनल वाले जो भी इवेंट है, इंटरनेशनल डिनर, बट भाई अब हम लोग वापस से जा रहे हैं अपने बस स्पेनिश दोस्तों से मिलने के लिए, और फिर हम वापस आ जाएंगे। लेट्स गो। सो वी आर गोइंग टू द 7th फ्लोर। I know. ये थी He doesn't say anything. Hi. This from Czech Republic? बाहर में क्यों? और इंटरनेशनल फ्रेंड्स ने इनवाइट किया। कैसी फीलिंग आ रही मेरे भाई? न्यू है, एक्साइटेड। The bar we will be going down to is the little bar. So we met our Spanish friend, sorry, not Spanish, Venezuelan friend, the last time when we went, so we have called it No, Say it again. you gotta. I'm gonna take a bite. You. Mageo, my friend, from where you from? From Spain. No, not. I'm She's from Venezuela, and she's going to I feed mean- me. This woman right here is going to feed me arepas, which is the pure form of papacitos. No. Okay, yes. So she's going to teach me a little German. So I have been, because I have been talking to the waitress. Vielen Dank schon. What is wrong about? I mean, I'm not German, first of all, but thank you for the chance. It's either vielen Dank or Dankeschön, and it's just like wrong if you say vielen Dankeschön because it doesn't make sense. But And- I mean, And what was the other one that? Tausend Dank, No. herzlichen Dank. What was that? Herzlichen Dank. Thank you from the heart, from like, yeah. Yeah. Okay. Cool. Yeah. Okay, guys. So I'm going to meet my new friends. So you guys already know her from my stories and everything. This lady over here. Tell us about you. Yeah. So first of all, just to set the context clear, she's a proper pure form of German. Yes, exactly. Is that the right way to say it? Proper pure. Yeah, pure form of German. I mean. But I'm from Bavaria. yeah. I'm studying tourism and I'm very excited to meet my new friend here. Do you like India? I love India. So I have you- a lot of Indian friends. You gotta say namaste. Namaste is just No,
but that's What is like namaste? I hello. forgot. What the? What is namaste? You're fucking eating. You know what namaste I just forgot even just slipped out of my mind. Hello. Hello. You Yeah, can yeah. say Namaste. namaste. Yeah. Tum kaise ho? Oh my god. Oh fuck, bro. That's crazy. मैं बहुत अच्छा हूँ. तुम कैसी हो? Undir? He bought a chihu. Yeah. Crazy, bro. Crazy. Now let me make you meet this woman right here. Where you from? I'm from Spain, but I live in Germany already a lot of years. No, you're such a liar. I have Russian actually. She fed me this banana cake that she cooked herself. 1 out of 10, how is it? Oh, that's 11 out of 10. Oh, thank you. Future chef, I guess. Yeah. You're gonna make a great pair with Ashish in terms of cooking food. I hope to learn from him. I'm not that good, I guess. Drunk? Yeah. You haven't drinking yet. No! Why is that? Yes. Gusto en conocerlo. En conocerte. Is it? Encantada. Buenos tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Habla español. And here we have our boy, Maxim. Yes, Maxim. Maxim. French, Spanish, but I live in Germany a long time. Yeah. Ein bisschen. I'm not kidding. I mean the hairstyle, no? Yeah. Like Loki. What do I do? You look like what was that? Zeus, yeah. You look like Zeus. You look like Hercules. Oh, actually! Yeah. You look like Hercules. That's a compliment for you, man. Okay, man. Yeah. I like French wine better than Spanish wine. French wine is. I never tried either. Do you wanna say something to that? I never tried either. I like Spanish better. But I thought you were Venezuelan, no? Any Hindi word? Oh man. I only know butter chicken. Chicken tikka masala. Oh, you know quite a lot. It's good. Is it? I love chicken tikka masala. And how's the bread? How's it called? Naan. Naan, yeah. Yeah, it's. Oh, is it? good. Do you know any slang in India? Bench. Nice. Yeah. What is Only the important words. very I important? know everything. Last but not the least, my friend from Mexico, What was my name? Pablo Escobar. You need some help? I'll call you for all of my drug dealings and all, you know. Of course, anytime you need. What do you know about India? I don't know. Tell me something. People, Oh my god, that's crazy. Yeah. What else? dangerous street food. You like it? Yeah, Awesome. I'm going to cook some for you. you should. Teach me a slang in Mexican. Slang in Mexico. ¿Qué pedo? Tepeo? ¿Qué pedo? Quepeo? ¿Qué pedo? Quepedo. What does that mean? It's like, what's up? What? No, but literally meaning pedo means actually a fart. But Oh my like God. in Mexico, you would say like a slang. How do you what's say- up? how do- Puta. What? Hijo de puta. It's not the same. It's not in meaning like. Well, yeah. Tida from Pakistan. Pakistan, yeah. Tida from Pakistan. And what was that the word again? Sorry. Hijo de puta. Ikoi puta. Right? With this, I bring you to the end of my journey over here with these beautiful people that I just happened to meet across because of this wonderful woman right here. Wow, thank you. Yeah, she's going to feed me papacitos. Oh no. And this beautiful, lovely ladies and my Greek gods and all. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. How to say like the Yeah. owners about it. So I'll tell you the history of Starbucks. So Starbucks apparently was not an Indian brand at all, right? Yes, it was And then- American, right? If I'm not wrong. Yeah. Yeah. And then one person decided in our country, his name is Sri Ratan Tata. He happens to be one of the most respected Also, guy. I mean, he's no more, right? So we really respect him very, very, very much, very much. And he also happens to Jaguar. So that is also a part of our country now.
So Oh, we, really? yeah. So we, I mean, actually, India it's really crazy. I mean, I don't know since when he owns it, but India has been showing 5 a years. lot of like 5 years. recently has been showing a lot of potential growth even in like Yeah. economics and Tell from them- one tell day. oh yeah. So I think when Alejandra was born, I went to pick her up. I went to pick her up. So you're basically my family. Yeah. I'm a of course Family you're member. Yeah. you're That's why we family. look so alike. Yeah. 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 You look good with beard though. That's my boy Ashish, along with Nicholas. We're gonna be going back at his place to have a little more fun. Have you ever been to his place? Yeah, of course. He's my brother. Oh. He's literally. What about you, my dear Thai friend? Oh, sorry. How do you want to be introduced? German or Thai? I identify more. Easy, my boy. Easy. Yeah. Sorry. I mean, I have the good German passport, but the spice of a Thai. Of both worlds. What was the Thai curry bowl? I mean, I forgot. What? The Thai curry that I was talking about. I was not being racist, but I really like it. What is that called? The Thai curry? Thai curry. Yeah, Thai curry. It's good. It's not racist. I'm really sorry. You know what did I say? I was laughing. I'm really sorry. Every time you put it. Efito amanake. Efito amanake. Efito. जैसे हम अब पकाने वाले हैं कि हमें बहुत भूख लगी है आशीष बनाएंगे मिस्टर कुक so we just put it up I mean you need oh my god this looks good bro ऐसा है वहाँ पे €2 का था लेके रख सकते हैं भाई खाना चाहिए कहाँ पे दो Top notch hoes got the mouth not to listen. Straight data, product of the errors. yeah so he 3, 2, 1. Mother. guys we just got back home हमें लग गई थी बहुत crazy भूख भाई हम कहा कि भाई हमने कहा कि यार चलो कुछ फटाफट जल्दी खाते हैं और मैं व्लॉग एंड वहाँ पे करना चाहता था ऑल्सो जस्ट वांटेड टू लेट यू नो गाइस कि यार ऑफ कोर्स थोड़ा सा इन सब चीज़ों में ना द स्पेसेस आर एक्सट्रीमली प्राइवेट एंड इट्स नो अबाउट यू टॉक एंड सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली इट गेट्स रियली अनकम्फर्टेबल किसी के फेस में कैमरा रख दो इट जस्ट गेट्स अनकम्फर्टेबल दैट्स द रीज़न मैंने कैमरा नहीं निकाला था आई थिंक आई जस्ट had some good amount of time with some great friends that I made today. We met people from Latvia. What was the countries? Latvia, Spain, Mexico, Venezuela, France, Brazil. I mean, so I really felt good about that. So इसलिए मैंने shoot नहीं करा. Of course, I hope you समझोगे सब. But ठीक है. With that, this vlog comes to an end. I'll see you guys tomorrow. Tomorrow we have a crazy day because we're gonna be going now to Hamburg. So. This will be in a week and now we are already going to a different city. I mean, I don't even know पढ़ने आने के क्या करने हैं but मस्ती नहीं रुकनी चाहिए. See you. Listen carefully. Yeah. But the things I have been seeing till now is that you're a very focused person, and I'm pretty sure whatever plans you have, they will go correctly because you are focused and you are like a hard worker. Wow, that's crazy. I just wanted to say that you fucking hard. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.